Hello and welcome back to my channel. In the yesterday's video, we discussed about homologous organs and divergent evolution. So in the today's video, we'll be discussing about analogous organs and convergent evolution. So let us see the definition first. Analogous organs are the organs which have different structure and origin, but they perform same functions. So such organs which have different structure and origin, but they perform the same function, such organs are called as analogous organs. Now, how do you think despite having different structure and origin, they're performing same functions? This is because they live in the same environmental conditions and they do not have any common ancestor. They do not have any common ancestor. That's why they have different structure and origin. But because they are living in similar environmental conditions, that's why they have adapt themselves to perform same functions. Now, analogy is based on convergent evolution. What is convergent evolution? It is a process whereby organisms not closely related independently evolve similar traits as a result of having to adapt to similar environments. Okay, so just for example, if there is a species A and B, A species gave rise to a species C and B species gave rise to a species D. Now C and D are individual different species. Now C and D are living in same environmental conditions. That's why they will develop same traits. So this is what analogy is all about, and this is what is called convergent evolution. Now if we talk about the example, wings of butterfly and birds, if you will see, बटरफ्लाई किसके अंदर आता है? इट कम्स अंडर ऑर्थ्रोपोडा. बर्ड्स किसके अंदर आते हैं? वर्टिब्रेट्स के अंदर, एव्स के अंदर आते हैं. तो वैसे इनका ओरिजिन अलग है, लेकिन इनके जो विंग्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? फॉर फ्लाइंग. सिमिलरली जो ऑक्टोपस की आइज़ होती है और जो मैमल्स की आइज़ होती है, इनका ओरिजिन अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है, लेकिन वो देखने के लिए अपनी आइज़ को यूज़ करते हैं. सेम इज़ द केस विथ फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स. पेंगुइन्स आपका एव्स के अंदर आता है और जो आपका डॉल्फिन है वो आपका मैमल्स के अंदर आता है. तो इनका ओरिजिन अलग है, इनका कोई कॉमन एंसेस्टर भी नहीं है, लेकिन जो इनके फ्लिपर्स हैं ये अपने फ्लिपर्स यूज़ करते हैं फॉर स्विमिंग. तो इसी तरीके से जब स्ट्रक्चर और ओरिजिन अलग हो ऑर्गन्स का, लेकिन सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग एनालॉगस ऑर्गन्स बोलते हैं. और एनालॉगस ऑर्गन्स किसकी वजह से डेवलप होते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से. इनको याद करने का तरीका है AC. A for analogous organs and C is for convergent evolution. जैसे मैंने आपको homologous और divergent evolution याद करने का तरीका बताया था HD, तो वैसे ही यहाँ पर आप AC से याद रख सकते हैं और homologous और divergent को आप HD से याद कर सकते हैं. तो I hope आपको ये टॉपिक समझ आया होगा. If you want these notes, you can mail me on this ID. Thank you for watching.